Hi everyone, good morning and welcome to the daily transform session with me, Dr. Sumer and Dr. Deepthi. And before we start today's transform session, I have a very important announcement. I'm sure you've already seen it. INI-CET notification is out and your INI-CET is on 9th of November. And we are here to first of all give you our blessings, our best wishes, and we want to make sure that you do it, kar lenge, just to remind you that the exam is now declared, ends all the speculations. I'm sure you will be able to do it. Yes, so finally the notification is out, and you all were thinking whether it'll be on time or not. So unlike NEET PG, yes, NESET is always on time. So we have still more than a month to go, and yesterday we did tell you that we have lots of things planned for all of you for your NESET. So now is the time that we decide that we are going to make the most of whatever time we have now. Yes. And also, today I also want to tell you that, because a lot of students had requested me to, pull my TND earlier. It was scheduled a little later and, people said, sir, thoda sa October mein kheech do. So I have, I've agreed to all your requests. I'll do the radiology TND on the DAMS app TND at 1 p.m. today. So please note the change in time. It is at 1 p.m. It is starting at 1 p.m. live. Please be there at time. A lot of people miss out on the time, so please join on time, beta. And not only this, I think Dr. Deepthi is also coming live today in the app live class. What time? आज तो ऐप पे डबल धमाका है. So it's me and Dr. Sumer. In one studio he's going to be there, and in the other studio I'm going to be there. It's a face off, Dr. Sumer. ये बात. So at Okay. 5 p.m., I think 5 p.m. Dr. Deepthi is going to take app live class for all the face-to-face and all the app live students on the app directly live from the studio. And I'll be taking at 1 p.m. DAMS app TND live. So please note the time, share with your friends so that nobody is missing it out. I'll also announce it on my Telegram, WhatsApp, everywhere as well. Also, so we come to the concept and the thing that we wanted to talk about today. To understand what we are going to talk about today, I want you to see a video and then we'll talk about it. Dr. Deepthi, what do you say? Let's see. Head into the PEEP site. That adds the pressure on the chin bar. Oh, hang on. Little flinch, Oh but my. she's recovered. So I hope No. Wait, Okay, Dr. Sumer. should Okay. I show it again? Yes, just show it one Head more into time, the and then I PEEP want to site. ask these bachas That adds the something. pressure on the chin bar. Oh, hang on. Little flinch, Oh but my. she's recovered. That was just awesome. So let me see who all can recall. This is related to one of the things we read yesterday in the class. Can you tell me which drug exposure leads to the image or the video that we saw right now? The finding in the image, which drug exposure is known to be associated with that finding? Tell me. And and we have to see that the most important thing is that how, despite not having the arms, she could do it. She could be the champion. And I hope you see whatever is holding us back is not our limitations. Whatever is holding us back is our mind. Once you control the mind, so अब ना we've talked about the drugs and the academics. मेरा क्वेश्चन है माइंडसेट का, वो बताना है बेटा आप लोगों ने. अब आप में से कौन ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि आपके पास परेशानी है और आप जीत नहीं पाएंगे? Okay. Can you tell me how many of you are thinking that you have some problems which are holding you back? How many of you are thinking that you have problems which are holding you back? Tell me. But now you see her again, you see Sheetal Devi, the world champion, and you realize कि यार परेशानियां इतनी बड़ी नहीं है मेरे पास जितनी उसके पास है. But she could do it. उसने सोचा हाथ नहीं दिए भगवान ने कि क्या मैं can I do the reverse? She did it. She is the world champion. Can I take inspiration from her? मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग बात है. मुझे खुद के लिए बहुत इंस्पायरिंग लगता है और दीप्ति को लगा, हमें लगा यार हम सोच रहे हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स है. नहीं है यार, नहीं है, कर लेंगे हम. राइज अबव. कोई भी जो तुझे रोक रहा है वो सिर्फ तेरा माइंडसेट है.
जो तूने अपने आसपास एक कहानी बना रखी है कि तू नहीं कर पाएगा। एग्री कर रहा है कि नहीं? ये अपने दिमाग में बना रखा है, सर मेरी इंटर्नशिप बिजी है, सर मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, सर मैं पेरिफेरल कॉलेज से हूँ, मैंने पहले नहीं पढ़ा, पिछली बार कर पाए। खत्म कर, आगे बढ़ यार, लगते हैं, है ना? डू एग्री और नॉट? इट इज ऑल इन अवर माइंड। निकालते हैं उसको यार। जब वो कर सकती है, इसको वीडियो को देख बार बार, वो कर सकती है तो तू क्यों नहीं यार? लेट्स विन इट। एंड मुझे लगता है कि आप, क्या आपको पता है कि आई एम श्योर, ऑल्दो वी डोंट नो हर पर्सनली, बट वी डेफिनेटली नो हर एज समवन who's made India proud and every girl proud. Do you think that people would have given her easier options? Yes, I'm sure people all around her would have told her to quit various things. Maybe they would have just told her to get married, just be there, right? And just be and accept what she is, and so people will always give you options which they feel they're imposing their judgments on you, right? They will tell you to make your life easy. उसको भी तो सबने बोला होगा ना, लेकिन उसने क्या सबकी सुनी? नहीं सुनी ना। उसने करा जो उसका मन किया करने का, राइट? एंड आई एम श्योर दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर, नॉट जस्ट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन but also as an individual to lead a life which is full of I would say कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ, and I don't need to bow down for in front of anyone. Yes, I can achieve things. She's a confident individual. She's made her name at world level, so this is something you all need to realize, that people will impose their judgments on you, tell you to take easier paths, to quit, to accept things as it is, right? But you have to realize that it is your life. I'm not saying this way or that way it is wrong. For some, maybe accepting easy is the easier thing or the better thing or what they want to do. For some, moving head on is what they want to do. So it's all about understanding what I seek in life, what I want from my journey of life, and then to go ahead with it. And we have to always look at examples which teach us something. Whenever we see such examples, it gives us an idea कि यार मैंने ना अपने आसपास ना एक, आप सब ने, हम सब अपने आसपास ना एक कहानी बुन लेते हैं कि यार मैं इस तरह के घर से आ रहा हूँ, या मैं इस तरह की सर्कमस्टांसेस से आ रहा हूँ, या मेरे को ये नहीं आता, या मेरे में ये कमी है, मैं एमसीक्यू नहीं कर पाता, मैं एम्स का नहीं कर पाता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। डू यू एग्री और नॉट? वो सब तोड़ना है। The ability to break free from all the opinions, and the what Dr. Devi said was opinions of others. मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो मायने नहीं रख रहे कि लोगों के क्या ओपिनियन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तू खुद क्या अपने बारे में सोच रहा है। The most important thing is when you are insecure, when you have self doubts, you open up yourselves to the opinions of the world. Yes, कभी that's सोचा है कि जब अगर ना सपोज कर, जब हम स्कूल में अच्छा कर रहा था तू, तो किसी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, तू चले जा रहा था, you had no problems with the world because you were winning the game. जब हारते हैं, इनसिक्योरिटीज आती हैं, हमारे पास कोई लिमिटेशंस होती हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा, अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि कैसे उसने वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो जब ये सब चीजें आती है ना, तब हमारे अंदर सेल्फ डाउट और एबिलिटी आती है, तब सडनली द वॉइस ऑफ द वर्ल्ड मैग्निफाइज, वो चारों तरफ सुनाई देना शुरू हो जाता है। उसको नहीं रोकेंगे ना, उसको नहीं रोकेंगे ना, नहीं जीत पाएंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये एक केवल हम एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे, हम जिंदगी की बात कर रहे हैं। जिंदगी में जीतने के लिए यू हैव टू ब्रेक फ्री ऑफ योर डाउट्स, ब्रेक फ्री ऑफ योर इनसिक्योरिटीज। डोंट लेट द वर्ल्ड गेट ऑन टू यू। यू हैव टू टेल योरसेल्फ द ओनली लिमिटेशन इज इन माय माइंड। मैं क्या सोच रहा हूं अपने बारे में, मैं क्या अपने बारे में अपने आप को फीड कर रहा हूं सारा दिन। अपने आप को ना चीयर लीडर बन जा। मैं ना कभी कभी ये सोचता हूँ कि ना, जैसे ना एक बॉक्सर है, अगर आपने देखा मोहम्मद अली, वो ना जब अपना रिंग पे जा रहा होता था ना, ऐसे बोलता जाता, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो लोग सोच रहे थे कि वो कुछ ना नार्सिसिस्ट है या क्या है, ऐसा क्या बोल रहा है, अपने बारे में बोले जा रहा है। तो बाद में अगर आप उसी लाइफ पढ़ो, कह रहा है कि आई यूज्ड टू डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि मैं जब लड़ रहा हूँ, जब सामने से पंच पड़ रहा होगा ना, तो मैं बेकार हूं, मैं नहीं है, तो और जोर से लगेगा। यू हैव टू हिट द लाइफ विद ऑल यू गॉट एंड यू हैव टू बी योर चीयर लीडर। अपना चीयर लीडर बनते हैं। स्टॉप लुकिंग एट द शॉर्टकमिंग्स दैट यू हैव, लुक एट द पॉजिटिव्स दैट यू हैव।
ये मैं अब माइक्रो लेवल पे, ग्रैनुलर लेवल पे आ जाता हूँ। सर मेरी बायोकेमिस्ट्री वीक है, वो छोड़, कोई तो स्ट्रांग होगा तेरा, उसकी तो बात कर पहले। सो लुक एट व्हाट यू हैव and use what you have, work on what you don't have, and make it happen, beta. Make it happen. Yes, absolutely. And we all need to realize that no matter what, if we want, तो हम कर सकते हैं. तो ये जो want है ना, ये बहुत जरूरी बात है. And to have that self confidence, because once that breaks, imagine itself, you have an outer covering, yes, and like the skin. What happens if there is a breach? Infections can come in, yes. So similarly, your outer covering is the confidence that you have about yourself. If that breaks, then yes, what Dr. Sameer said, दूसरों की opinion, दूसरे के judgments, yes, and their negative words, negative thoughts, they get entry into your system. So you have to ensure that your outer covering, your shell is really strong. And that shell is made up of you, your confidence, your image about your own self, your perception about yourself. Keep it very strong, keep it high. Yes, and work towards it. अगर लगता है कहीं पे कमजोरी आ रही है, work towards it, seal the breaks. Right? Can you all seal the breaks and not let these judgments, opinions, negative thoughts crawl into your system? Yes? So all you need to do is constantly seal the brakes. और ना मैं एक बच्चे का क्वेरी देख रहा हूँ कि वो कह रहा है कि सर रियलिटी तो अलग होती है ना, यही तो बनाना है ना, अपने सपने को ही तो अपनी रियलिटी बनाना है ना, यही तो गोल है ना जिंदगी का। भाई अगर मतलब ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल मतलब अगर अपन मानेंगे यार मेरे सपने हो नहीं पाएंगे तो नहीं हो पाते बेटा। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। To break through the barrier of negativity in the world, we need massive optimism. We need to get the escape velocity that Dr. Deepti talked about in the video 2 days back. जब रॉकेट लॉन्च होता है ना तो ग्रेविटी उसको रोक रही है पीछे, वो ग्रेविटी तेरे सेल्फ डाउट है, तेरी इनसिक्योरिटी, यू हैव टू लॉन्च इट विद ऑल द एस्केप वेलोसिटी दैट यू हैव। निकलना पड़ेगा उसमें से। ये बोलना कि दुनिया तो खराब ही होती है, ये तो फिर जिंदगी मजा नहीं आएगा। मजा भी तो आना चाहिए ना। तू एग्री कि नहीं? जो हम जी रहे हैं जिंदगी, इसमें मजा भी तो आना चाहिए ना। वो मजा तभी आएगा ना जब हम फाइटर बनेंगे। मैं कह रहा हूँ यू आर अ फाइटर। मैं मेरे सभी बच्चों को कह रहा हूँ, look at the upcoming exam as an opportunity. Go give it with all you have. Do all you have. Put all you have. Put your 100% into it. Bring your fire in the belly in the picture. Take inspiration from the champions that you see around and attack the life. अपन ये नहीं वेट करते जिंदगी मेरे लिए क्या करेगी, मैं सोचता हूँ मैं जिंदगी के लिए क्या करूँ। लेट्स गो अहेड एंड डू इट। लगते हैं यार, लेट्स हैपन टू लाइफ, नॉट डोंट लेट लाइफ हैपन टू यू। Right, somebody was, is also writing that what about, external circumstances which we can't control. So you have to know this, that, it is like, imagine you standing in the field, okay, and ready to bat. Now you are expecting that the ball is only going to come from one side, which is exactly straight, right? But that's a cricket match. Real life is not like this. The real life is you're standing and the ball can come from any direction, okay? Any इट्स direction. ब्यूटीफुल एक्चुअली। Yes. पीछे से भी आती है कई बार असली जिंदगी Yes. बॉल So, पीछे से आ जाती है कई बार। what can you do? You cannot stop the balls, but you have to learn to hit some of them really hard. Some of them you have to, ditch, maybe bend down, let them go. Not all battles can be fought at the same time, right? So जितनी भी बॉल्स आ रही हैं, सबको खेलने की कोशिश करेंगे, छक्का भी मारने की कोशिश करेंगे, और जो लग रहा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको जाने देंगे। सारी लड़ाइयाँ हम एक साथ नहीं लड़ सकते बच्चे, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि इस वक्त मेरी जिंदगी में क्या जरूरी है, ठीक? And that's what makes life interesting also. The balls can come from any direction. You hit some, you get hit by some, you miss some, but that is what makes it exciting ना। अगर भाई सिंपल लाइन में चलते हम जीतते रहते जिंदगी खत्म हो तो तब भी मजा नहीं आएगा ना। मजा तो जीत का तभी आता है ना जब हमने एक बार हार देखी हो, तभी तो पता चलता है उसकी कीमत क्या है। समझ पा रहे हैं? तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि every student has the capability to reach to the top level irrespective of the noise around. लोग बोलते बहुत कुछ है, वो अपनी अपनी जिंदगी के तजुर्बे बता रहे हैं, आप अपनी सोचें।
क्या आपके अंदर वो फायर है जो बदलाव ला सकती है? क्योंकि अपनी ट्रैप हो गए, वी आर ट्रैप्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, वी आर ट्रैप्ड बाय अवर प्रीवियस वर्क। हम कितना पहले पढ़े, नहीं पढ़े, हमने क्या सोचा था, पेपर कैसे हुए, स्कूल क्या था, घर कैसा था, कहाँ रहता था, बहुत सारी चीजें which build our mindset, and they are all trying to hold me back. If you see, I was once watching on TV. The founder of Zomato comes from a very small town in Punjab, and he says कि मेरे आसपास ऐसा नहीं था, हमारे वहाँ टाउन में लोग नहीं कह रहे थे कि तुम इतना बड़ा करोगे, आज इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बन गया है वो। तो यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर सर्कमस्टांसेस, तुम भी कर लोगे। ये मत सोचो कि मतलब इफ यू कीप सेइंग द नेगेटिव थिंग्स इट विल मतलब पुल यू डाउन, फिर तो दुनिया तो कह ही रही थी, तूने भी कह दिया तो खत्म हो गया। यू हैव टू बी योर चीयर लीडर, अपना चीयर लीडर बनना है। सो ऑन दैट नोट वी I again remind you, I look forward to meeting you all in the app TND at 1 p.m. today, and or Deepti will meet you in app live at 5 p.m. today, and we have a very important gift for our FMG students. We have a very important gift for our FMG students. We are now launching the famous DAMS TND specifically for FMG exam. I shared the video yesterday, and Dr. Deepti will also talk about it, but it is very important that please, if you have any FMG student who is struggling, जो उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ पास, TND is a very very potent course. अभी तक NEET PG का game changer था. We have launched a special TND for our FMG students. Okay, and I see a couple of queries that I would want to answer. सबसे पहले तो we have our old student with us, Jaya Bharti. She says she's an old student from 2020 and she's now pursuing her DM, and she's back on this channel. She just randomly came across us in the live. It's such a pleasure to have all our, previous Danzonians, meet us here and there. It brings so much of joy and happiness to us to see you rising and doing so well in life, right? We are always very proud of each one of you. Then I also see a couple of queries that, like all good bachas, you have kept your promise and you have given the target of the INI CT mock, right? Some of you have given the grand test as well, which is very good. And the number of correct wise zoning remains the same. So I would just reinforce that again, that if you are at less than 125 correct consistently in your grand test or your mock test, then Beta G, we need to work on the content, which means you will really benefit from doing the classes. Okay, if you have done your classes once, maybe going through the back to basic videos will help you. So, if you have done classes once, then maybe the TND program is going to be really, really helpful, which gives you time to revise from back to basics plus appear for tests. People who are between 125 and 145, you need a little bit of both. You need some subjects maybe pushing you a little down, so you need to identify, work on them selectively. You need to revise others, and you need to put up your MCQ skills, right? Beyond 145, the farther you go or the higher you go, the better it keeps getting. So you have to keep challenging yourself by giving more and more tests, keep identifying your mistakes, and then selectively keep going back to notes, right? So those were a couple of queries that I saw in the chat box. Okay. So, today we leave you with this thought that whatever is holding you back is a thought in your mind. If you change your thoughts, the change first happens in your mind, then happens in the real life. If you change your thoughts, if you change your set of beliefs, if you believe that you're a champion, you will be the champion. If you think that you are good enough, you will be good enough. You have to change the mind. You have to stop talking about the negativities and things that you're holding you back. You have to start looking at the positive. लगते हैं यार, जीतने के लिए खेल रहे हैं तो जीत के ही दिखाएंगे. I am with you. Our commitment is that we are with you every day at 10 a.m. and we are here to tell you कि जब हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं. Sometimes I had a class and during the class एक स्टूडेंट बोला था थक गए. मैंने बोला अगर तू थक गया ना तो अगले जो 4 घंटे क्लास होगी ना मैं खड़े होकर लूंगा, मैं नहीं बैठ रहा. अब अगर तूने थके होने की बात की ना तो कान पकड़ के बैठा दूंगा क्लास के अंदर. And फिर वो And कहता सर आप that's very sweet of Shagufta. She says 10 a.m. is the golden hour for her. Shagufta, the same holds true for us as well. 10 a.m. is really the golden hour for us as well. हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो,
कितने भी हम मोरल में लो क्यों ना हो, या हम कुछ और क्यों ना सोच रहे हो, when it comes to 10 a.m. we're like all pepped up, and I don't know from where we get the energy. I think with God's grace, especially when we have to connect with all of you, it fills up with enthusiasm, energy. We are also back on track, you are also back on track, and that's what symbiosis is all about, right? So we wish you all the best and have a great productive day ahead. God bless you all. Right. See you all at 5 p.m. for the App Live class. Take care, everyone. Bye bye. 1 p.m. for app TND, beta. 1 p.m. for app TND. Bye It's everyone. like a competition going on. मेरी class. Okay. आज दोनों की class. स्टैटिस्टिक्स देखते हैं किसके में ज्यादा आते हैं. ओके. ठीक है, done. Challenge accepted. आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूं